Welcome students. Today we are going to continue with the chapter number 7 integrals, and the topic is fundamental theorem of integral calculus. So this particular concept is in definite integral. So we have started definite integral and we understood the definite integral using limit of a sum, correct? How we understood? So we found the area under the curve, correct, and we divided into n strips, and those area under the curve for those n strips, by limiting them to the sum, we get the definite integral. So today we are going to understand fundamental theorems of integral calculus. But before we get to this particular function, let us try to understand what is area function. Then we'll define the theorems, correct? So what does area function means? So suppose we have a graph something like this, or a function something like this, and this function is defined with the limit a to b. This is our function y equals to f of x, correct? So as per this function we know how to get the area. So a to b f of x dx, correct? This is the definite integral area. But suppose if we have a point x which is somewhere in between this a to b, somewhere between a to b, and let me say this point is x. So what will be the area now under this particular function x, correct? So I can say by area a say x integral of f of x dx, correct? And depending on that, if I say the value of x decrease or increase, the area will also decrease or increase. Means if my x is right now over here, if I go back, the area will decrease. If I move this x towards this side, so my area will increase, and if I reach at b, then this will be the area, correct? So basically I can say something like this, that the area of my integral, area of this under the curve, depends on this x, isn't it? The area of this shaded region will depend on this x. जैसे जैसे x मेरे increase decrease होंगे, the area will also increase decrease. So I can say the function or the given function is depending on the variable x, correct? And if any function is depending on any variable, can we define it as a of x? Why I said a of x? Because we are looking at the area function, correct? So here a of x is the area function. This is area function which is depending on x, which is depending on x. So area of x is equals to integral a to x f of x dx. This is called area function a of x. Simple. Now with this kind of understanding, we'll see कि किस तरह से हमारे fundamental theorems आते हैं. So let's go for first fundamental theorem. First fundamental theorem of integral calculus. Now what does it say? First fundamental theorem. It says that let f be a continuous function. What kind of function we need? Continuous, correct? Let f be a continuous function. continuous. Continuous in, let's say, close interval a to b. Let f be a continuous function in the close interval a to b. और a of x हमें पता है our area function, a of x be area function. Then what I can say is a dash x is equals to f of x for all x belongs to a to b. For all x belongs to a to b. This is close interval, correct? So what we are trying to understand here is, if I have something like this and if I differentiate this integral, correct, it will definitely give me f of x only. This is what we have understood as an antiderivative, correct? If I have some function in the form of integral and if I find its antiderivative, I will get the original function. So if I differentiate this particular whole integral, then I will get f of x only. That's what this says in the theorem, first fundamental theorem of integral calculus, correct? Now based on this first fundamental principle of calculus, we'll have one more, that is called as second fundamental principle of calculus. So let's try to understand what we have in second fundamental principle of calculus.
second fundamental, let's say theorem of integral calculus. Again, in this same function should be continuous in closed interval a to b, correct, and f be the antiderivative, and let f be the antiderivative. Now whatever I am going to show here, we already understood this in the previous class, correct? So pay attention, आराम से पता चल जाएगा. If I have an integral a to b f of x dx, correct, so it will become f of x, that's why we say f is antiderivative. So solving the integral, we get something, the function called f of x with the limit a to b, and we know that this becomes upper limit minus lower limit. So this is how we can write this thing, correct? Now many of you may be thinking, okay, sir, why we are not writing the constant if we are integrating same way, correct? Now suppose you want to write a constant, let me show you like this. If let's say I wrote the constant and let's say this is the limit, correct? So what I will do, I will put the upper limit. So first upper limit f of b plus c minus lower limit f of a plus c, and if you open the bracket, f of b plus c minus f of a minus c, c will get cancelled and you will get somehow f of b minus f of a, यानी कि antiderivative with the value of b and antiderivative with the value of a with the lower limit, and this is with the upper limit, correct? So this is what we have in the second fundamental theorem, and based on this theorem only we are going to solve our problems, because it helps us to solve problem easily compared to the limiting of a sum, correct? Limiting of a sum में हमें बहुत डिटेल में करना पड़ता था. Now problem solving will be easy, but to solve this kind of a problem we must remember all the methods of a definite integral. If you remember all the methods of indefinite integral, अगर indefinite integral की सारी मेथड पता होगी तो ये सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं लगेगी. Means what we are going to do is we are simply going to take care of such a way that whatever this particular function is, we'll solve it by a indefinite integral method, and then we'll just simply substitute the upper limit and then lower limit and we'll get the answer. Are you getting me? What we are going to do based on this particular theorem, correct? There are so many remarks. Out of those also I told you in this particular section only कि ये c रहना चाहिए, this is antiderivative वगैरह, all those things, correct? So I guess based on this we should start exercise, because छोटा सा concept है and unnecessarily will not waste any kind of time. So let's go for the exercise 7.9. Before we go for exercise 7.9, I want to show you something else, correct, which is very important. Now as I said that it should be continuous in the closed interval a to b and something like this. Now for instance, suppose we have something like this, integral minus 2 to 3 x into x square minus 1 whole raised to 1 by 2 dx, correct? Now if you look at this integral, I can definitely say for sure कि आप लोग आराम से इस integral को solve कर दोगे, you will get the answer and all those things. But the condition says that f should be continuous. What does continuous means? That it should be defining from whole interval minus 2 to 3. But if you pay attention here, this is square root, so this will become square root of x square minus 1. That means x square minus 1 should be greater than equals to 0. That means x square should be greater than equals to 1. And when I say x square should be greater than equals to 1, we get two conditions. One, x is less than equals to minus 1, and second, x is greater than equals to 1. Now if you look at this two interval, minus 1 से छोटा, so minus 2 से minus 1 and then 1 से 3. But what about the value between minus 1 to 1? This particular function will not define for the value minus 1 to 1. And when such thing is not possible, you cannot solve this kind of. You will solve and you will get the answer, but we are not supposed to solve this kind of integral when we have something like this, correct? Now let's start with the exercise 7.9. Now see, what we are going to do is we are going to solve only those questions which is going to be new for us, correct? I am not going to solve each and every question, so pay attention. The first one is integral minus 1 to 1 x plus 1 dx. Now this is not a kind of question which I should solve, but still it's a first one, so I started with this one, correct?
Now how are we supposed to solve this? तो कि भाई इंटीग्रल ऑफ दिस क्या होगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 1 का x इंटीग्रल माइनस 1 to 1. Just put upper limit minus lower limit. Remember like this, upper limit minus lower limit. So I will always do like this, upper limit minus 1 का स्क्वायर 1 minus 1 lower limit. Open the bracket, 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1. So 1 by 2 get cancelled and we got the answer 2. Are you getting? Similarly, if you look at question number 2, integrals 2 to 3 1 upon x dx, and I don't think so it's very difficult. 1 upon x का इंटीग्रल होता है log x 2 to 3 and we'll just simply put the limit. So log 3 minus log 2, this will become log 3 by 2. Correct. Third is again very simple. Let's say fourth one, integral of 0 to pi by 4 sine 2x dx. 0 to pi by 4 sine 2x dx. Now how are we supposed to solve this? So we all know integral of sine, what is minus cos 2x divided by 2, 0 to pi by 4. Let me take minus 1 by 2 outside. So cos 2 pi by 4 minus cos 0. Correct. So minus 1 by 2. This will get cancelled, pi by 2. Cos pi by 2 is 0 and cos 0 is 1. So we will get 1 by 2. See how simple and quickly we are getting this kind of a problem. Let's say fifth, you can do cos 2x, simple kind of problem again. Let's go for the sixth one. What do we have in the sixth one is integral 4 to 5 e raised to x dx. अरे ये भी सिंपल है, क्या होगा e raised to x का इंटीग्रल e raised to x 4 से 5. So answer is going to be e raised to 5 minus e raised to 4. I can't do anything about this. It's an subtraction. Correct. Similarly question number 6 हो गया. 7 में कुछ नहीं है. It's very very simple question. Correct. Then let's go for the 8th one. देखो 7 भी if you want I can try. It's nothing to harm in that one. तो 7th में क्या बोला है, इंटीग्रल 0 to pi by 4 tan x dx. So we all know what is the integral of tan x, log modulus of sec x, and it will be 0 to pi by 4. So it becomes log modulus sec pi by 4 minus log modulus sec 0. Now what is the value of sec pi by 4? Sec pi by 4 यानी कि cos pi by 4, 1 by root 2 यानी root 2. So it becomes log square root of 2 minus sec 0 1. So this will be log root 2, or you can write 1 by 2 of log 2. दोनों में से कोई भी लिखोगे सही आंसर. Because sometimes we need to do something like this, that taking power ahead of the value. Correct. So this is how we are supposed to solve this kind of all questions. है ना, मजा आ रहा है, क्विकली जा रहे हैं, आई नो दैट, बट वी हैव टू बी, है ना. एक्सरसाइज बड़ी है एंड आई विल फोकस ऑन अ गुड प्रॉब्लम्स. सिमिलरली इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 dx upon square root of 1 minus x square. I know directly integral of square root 1 minus x square. What is the formula? Sin inverse x, 0 से 1. So that it becomes sin inverse 1 minus sin inverse 0. Sin inverse 1 is pi by 2 minus sin inverse 0 is 0. So answer is going to be pi by 2. Are you getting me? है ना. So we are doing in a very simplest way. मैं इतना भी स्पीड में नहीं जा रहा हूँ कि आपको पता ना चले. 0 to 1 dx divided by 1 plus x square. What is the formula? Tan inverse x. Now pay attention. Here it is 1. So that's why it's simply tan inverse x, but actual formula is 1 upon a tan inverse x by a. Here simply sin inverse x by a. Correct. So again 0 से 1, tan inverse 1 minus tan inverse 0. 1 will come out in pi by 4, 0 is 0, so I got tan pi by 4. जितने क्वेश्चंस बीच में छूट रहे हैं, means which I am leaving it for you people. Correct. You people give it a try and get it done. Now let's see question number 11. 2 to 3 dx x square minus 1. Now again it is a standard formula. Which formula? Dx upon x square minus a square. And if I directly apply the formula 1 upon 2a, a is 1, log modulus of x minus a, again a is 1, divided by x
plus 1 and limit 2 to 3. We are not supposed to write plus, correct? Upper limit, तो log 3 minus 1 2, 3 plus 1 4, minus log lower limit 2 minus 1 1, 2 plus 1 3, करेक्ट? कर्ली ब्रैकेट बनाया है तो ये भी कर्ली ब्रैकेट से ही बंद करेंगे. सिंपल. 1/2, this will get cancelled, so I got log 1/2 minus log 1/3, and if two log are in subtraction I can put them in division. 1/2 upon 1/3, so this will become 1/2 of log 3/2, because denominator goes to numerator और numerator के denominator की value नीचे आ जाएगी. So this becomes 3/2, isn't it? चलो. Then if we proceed further, should I solve 12(1)? चलो देख लेते हैं. I equals to integral 0 to pi/2 cos square x. Now how are we supposed to do this kind of integral? Cos square x आ गया तो फिर कैसे करेंगे? तो कि भाई cos square के direct formula we don't have available. So if we have something based on trigonometric identities, yes, definitely those of you think of trigonometric identities, very good. It's going to be 1 plus cos 2x by 2 dx. 1/2 outside, 1 का इंटीग्रल x, cos 2x का sin 2x डिवाइड बाई 2, इंटीग्रल 0 to pi/2. करेक्ट. नाउ फर्दर क्या करेंगे? तो के 1/2 बाहर, अपर लिमिट pi/2 प्लस साइन 2 टाइम्स pi/2 करोगे 2 2 कट sin pi/2 minus, let me put like this, lower limit 0 plus sin 0 0. So कितना बचा? 1/2 pi/2 sin pi again 0 I guess, है ना? तो simply we got answer pi/4. Are you getting? So this is how we are supposed to solve this kind of all questions. Now let's go for question number 13. What do we have? So it is given integral 2 to 3 x upon x square plus 1 dx. Correct. Now if you just forget about this limit, you can solve this question very easily, है ना? But here limit is given, we cannot just simply forget about it and get the problem done. Why? Because I'm going to show you something which is very important over here, and that's what we did in the limit as well. Correct. तो कैसे करेंगे? तो I can see something like this, that if I let x square plus 1 equals to t, so it will become 2x dx equals to dt. So I got x dx equals to dt by 2. So x dx will be replaced dt by 2. But when you change the limit or when you substitute in a definite integral, you have to take care of changing the limit. What does that means? That means when x equals to 2, limit is 2 to 3, so x equals to 2, 2 का square 4, 4 plus 1 5, so t is equals to 5. Similarly, when x equals to 3, 3 square is 9, 9 plus 1 10. Are you getting? So this is how we need to take care of this. So it becomes integral 5 to 10. Instead of x dx, it becomes dt by 2 and divided becomes t. So 1/2 बाहर, 1 upon t का integral log t, and this will be 5 to 10 plus there will be no c. Isn't it? c नहीं आएगा. Simple. Now we'll just simply substitute. What we will substitute? You may be thinking कि सर t की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी. No need now. There is no meaning of doing that. We have already balanced the limit. Correct. So just simply put the upper limit and lower limit. So it will become log t, यानी कि 10 minus log 5, and this will give us 1/2 log 10 by 5, यानी कि 2. Correct. Now you may be thinking, sir, if I want to back substitute. If you want to back substitute, then your changing in limit is not considered, because back substitute will make this x square plus 1. Then 2 to 3 will be allowed. Otherwise not. But don't do that. Always change the limit when you do substitution in definite integral. This is the step you should always remember in your mind. Correct. Now let's have a look at 14th one. It says integral 0 to 1 2x plus 3 divided by 5x square plus 1, है ना? You may be thinking कि अब ये कैसे करें? तो partial fraction सोचोगे या something else. So what I can do is, can I split them up
इंटीग्रल 0 to 1 2x divided by 5x square plus 1 dx and here 3 divided by 5x square plus 1 dx. करेक्ट. आई नो हमने ये मेथड डिटेल में सीखी है, फिर भी मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं. यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम above and 5 from here, so it will become 2 by 5 integral 0 to 1 x upon x square plus 1 by 5 dx plus same thing here 3 by 5 common 1 upon x square plus 1 by 5 की जगह मैं लिख रहा हूं 1 by 5 square dx. This is standard integral, it will be solved directly. But what about this one? So let me say this is I1 2 by 5 I1 plus 3 by 5. This can be solved directly. Sorry, यहाँ पे भी लिमिट लिखेंगे 0 से 1 0 से 1. When we split them up, we are supposed to write the limit. I didn't split the limit. I split the terms. Correct? मैंने लिमिट नहीं split की है. Don't confuse that. X square plus a square. So 1 upon a tan inverse x by a. Limit 0 से 1. First let's solve I1, then we'll put over here and we'll get it done. So I1 solve करने के लिए 0 to 1 x square plus 1 upon 5 dx. Let x square plus 1 upon 5 equals to t. And if you differentiate it, 2x dx equals to dt. So somehow ये 2 भी आपका utilize हो जाएगा, but now we cannot do that. So let's say x dx equals to dt by 2. And what we are supposed to do, we are supposed to change the limit. So when x tends to 0, है ना, यानी कि x 0 था तो t कितना मिलेगा, तो कि 0 लोगे तो t की वैल्यू 1 by 5. And when you take x equals to 1, your t will be 1 plus 1 by 5, 5 plus 1, 6 by 5. So now my integral will change. Now my integral will change and it will become something like this. 1 by 5 से लेके 6 by 5. x dx will be dt by 2, denominator में t. So this will become 1 by 2 log modulus of t 1 by 5 से 6 by 5. And if you put the limit, then it will become log 6 by 5 minus log 1 by 5. Correct? And इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो 6 by 5 डिवाइड by 1 by 5, तो 5 5 कट होके 6. This is value of I1. Therefore I will be 2 cut 1 by 5 log 6 plus 3 by 5 into square root of 5 ऊपर लिमिट लगा दो तो tan इनवर्स 1 यानी कि √5 माइनस tan इनवर्स 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखनी है ना. सो दिस विल बिकम सिंपली 1 by 5 log 6 प्लस दिस विल गेट कैंसल्ड एंड इट बिकम्स 3 by √5 into tan inverse √5. That is your answer. Are you getting? This is how we are supposed to solve this kind of questions, and it becomes little bit lengthier as we are proceeding in the exercise. You can understand that. है ना, पहले 8-10 problem just based on the formula to help you to recall the concepts. If we recall the concepts, problems getting lengthier. Are you getting me? So this is how we are supposed to solve when we have something like this. If you want, you can go for the partial fraction, but I suggest don't do this in this kind of a problem. Then we can do it in a simple way. Correct? You can pause the video and note it down. Now let's go for next one, which is question number 15, which is something like this: 0 to 1 x e raised to x square dx. Here don't go for the integration by parts, otherwise it will be very difficult. Here we can solve this particular problem as considering x square equals to t, that means 2x dx equals to dt. So x dx is equals to dt by 2. Limit change करनी पड़ेगी. So when x tends to 0, t also, and x 1 तो t भी 1, क्योंकि x का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा. सो लकीली यहाँ पे आपके इंटीग्रल चेंज नहीं हुए. बाकी आपने देखा इन द प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स वी सॉ दैट इंटीग्रल्स चेंजेस. करेक्ट?
x dx की जगह पे dt by 2 and it will become e raised to t. So 1 by 2 outside, e raised to t का इंटीग्रल e raised to t 0 to 1, 1 by 2 e raised to 1 minus e raised to 0. So e minus 1 by 2. This is the answer. Simple. Correct. Before I go for 16th one, let me see के क्या है. Correct. Should I solve 16th one for you or not, or you people are able to do this? What do you think? Question number 16. I equals to 5x square divided by x square plus 4x plus 3 dx. है ना. अब देखो, generally when we are solving a problem, we don't intentionally pay attention to the power of the numerator and denominator. But we have to keep that in our mind whenever you see something like this, because here numerator has the same degree as denominator. That means this may be improper rational function. We have to convert into rational function. So first of all, x square plus 4x plus 3 into 5x square. So simplify. 5 4s are 20x, 5 3s are 50. Minus minus minus. So I got minus 20x minus 15. So this will be converted. So sorry, integral की लिमिट है 1 से 2. 1 से 2. 5 minus 20x plus 15 divided by x square plus 4x plus 3 into dx. And if you split it up in the sense of कि इसका इंटीग्रल होगा 5x 1 से लेके 2 तक minus इंटीग्रल 1 to 2 20x plus 15 divided by x square plus 4x plus 3. I guess x plus 3 into x plus 1. Am I right? X square 3x, then x and 3 ones are 3. And let me say this is I. But I लिखते साथ में ये भी कर लेते हैं. 5 2s are 10 minus 1. मतलब 5 ones are 5 minus I1. Why to write integral also? I1. That is 5 minus I1. Now I1 क्या है? Integral 1 to 2 20x plus 15 divided by x plus 3 into x plus 1 dx. So now we have to go for partial fraction. अब partial fraction कैसे करेंगे? Now how are we supposed to do the partial fraction over here? So same method. 20x plus 15 divided by x plus 3 into x plus 2 will give us x plus 1. So a upon x plus 3, b upon x plus 1 for x equals to minus 3. है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ because already lengthy है ना. So minus 3 means minus 60 plus 15 minus 45. ये यहाँ जाएगा, ये इधर is equals to a into minus 2. So I got a 45 by 2. Similarly for minus 1. So minus 20 तो minus 5. Minus 1 ये गया, b minus 1 plus 3 2. So I got b equals to minus 5 by 2. Simple. So that means 20x plus 15 divided by x plus 3 into x plus 1 is converted into 45 by 2 upon x plus 3 minus 5 by 2 upon x plus 1. So I1 सीधे सीधा convert हो गया 1 से 2. Let me take constant also outside. तो क्या है, प्रॉब्लम ही ना रहा है. So 45 by 2 outside, 1 से 2, 1 upon x plus 3 dx minus 5 by 2 outside, 1 से 2 dx upon x plus 1. Now integral is very easy to put. Correct. 45 by 2. This will be log modulus में x plus 3 1 से लेके 2 तक minus, okay, there are so many sign, मतलब brackets बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. So let me write like this. Log modulus of x plus 3 1 से 2 minus 5 by 2 log modulus of x plus 1 1 से 2, like this. Correct.
एंड देन सेपरेटली हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे दोनों साइड पे, दोनों साइड पे इन द सेंस इन दिस टू फॉर्म्स. सो 45/2 log अपर लिमिट के हिसाब से 2 + 3 5 माइनस 3 + 1 4 माइनस 5/2 log 2 + 1 3 minus 1 + 1 2. So simplifying this will become log 5/4 minus 5/2 times log 3/2, and we'll simply put this in this particular one. So I will be 5 minus 45/2 log 5/4 plus 5/2 log 3/2. There will not be any constant c. This is going to be the answer of question number कौन सा किया 16 वाला. करेक्ट. आई होप यू पीपल आर गेटिंग द आइडिया के किस तरह से हम हमारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं. सिंपल. 17 आई कैन से यू पीपल कैन डू इट, है ना. सिंपली स्प्लिट देम अप. sec² x का 10x हो जाएगा, x³ का x⁴/4 और 2 का 2x/dx. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आई सजेस्ट कि आप लोग आराम से कर लोगे. दिस विल बी इंटीग्रल 0 to pi sin² x/2 minus cos² x/2 dx. Now by looking at it, don't get afraid. Actually this is the easy problem. Correct. क्या हो जाएगा? Simply 0 से pi. What is cos² x minus sin² x? cos 2x. तो यहाँ पे आ जाएगा minus cos x dx. What will be the derivative of cos x? Integral of cos x sin x. So minus बाहर sin x 0 से pi minus sin pi माइनस sin 0. और डेफिनेटली ये तो 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव मतलब वैल्यू ही नहीं देगा. एवरीथिंग विल गिव अस 0. आर यू गेटिंग? सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो, नोट दिस प्रॉब्लम डाउन, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. Now let's have a look at 19th one. Correct. This is almost similar to the problem I guess we did in question number 13-14. Somewhere around we did something like this. So again here also we can do something like this. Let's say 0 to 2 6x upon x² plus 4 dx plus 3 constant 0 to 2 1 upon x² plus 4 dx. Now this is direct formula. x² plus a² 1 upon a tan inverse x by a. But here what we can do, so let me say I took 3 common, correct, and it becomes integral 0 to 2 2x upon x² plus 4 dx plus 3 1 upon a tan inverse x by a and integral 0 to 2. सिंपल. अब एक काम करते हैं, वी कैन से दिस इज I1 प्लस दिस वन लेट्स से 3/2 एंड इट विल बिकम tan inverse 1 बिकॉज 2/2 1 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम tan inverse 0. लेट मी पुल इट फॉर 1 or 2 lines. So tan inverse 1 is pi/4 and 0 will be 0. So let me say this is equation number 1. अब I1 क्या है? 0 to 2 2x upon x² plus 4 dx. So if I simply let x² plus 4 equals to t, तो 2x dx equals to dt. X tends to 0, so t will be 4. And when x tends to 2, so 2 square is 4, 4 plus 4 8. So now my limit changes from 4 to 8. I1 के लिए बात कर रहे हैं. I1 4 to 8 and 2x dx become dt and x² plus 4 becomes t. So it becomes log modulus of t 4 से लेके 8. So it will become simply log 8 minus log 4 and 8/4 यानी कि 2. It will become log 2. From 1 क्या हो जाएगा? I equals to 3 times log 2 plus 3 pi/8. 3 times log 2 plus 3 pi/8. Very simple, isn't it? So let's have a look at 20th one, which is given something like this: 0 to 1 x e raised to x
प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स। ध्यान से करेंगे, इसमें भी कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। लेट्स स्प्लिट देम अप फर्स्ट। 0 से 1 एक्स रेस टू ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से 1 साइन पाई एक्स बाई 4 डी एक्स। लेट मी कॉल I1 एंड I2। यहीं पे I1 I2 स्प्लिट कर लेते हैं, सो कोई डिफिकल्टी रहेगी नहीं। पहले अगर हम I1 के बारे में बात करें ना, तो I1 इज क्वाइट ट्रिकी इन द सेंस कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि x और e रेस टू x में वी कैन अप्लाई इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इजंट इट? कैसे? तो कि भाई दिस शुड बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस शुड बी सेकेंड फंक्शन। तो x एज इट इज, e रेस टू x का इंटीग्रल e रेस टू x, इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1, सॉरी यहाँ पे वापस इंटीग्रल e रेस टू x का e रेस टू x dx, और हमें फाइनली मिलेगा x e रेस टू x माइनस e रेस टू x 0 से 1। करेक्ट? लेट मी पुट इट लाइक दिस, 0 से 1। करेक्ट? एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइक x इंटीग्रल 0 टू 1 e रेस टू x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 dy dx ऑफ x इंटीग्रल e रेस टू x dx करली ब्रैकेट dx। ऐसे आप प्रॉपरली इनडेफिनेट इंटीग्रल आप ऐसे लिख सकते हो। करेक्ट? फिर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, सो इवेंचुअली यू विल गेट हियर ओनली। देखो x e रेस टू x 0 से 1। अब जब ये लिखते हैं ना, तब ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो जाती है। करेक्ट? दैट इज वाई आई डोंट प्रीफर दिस वे। तो हम इसी तरह से लिखेंगे डायरेक्टली थोड़ा करके, एंड वी गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ अपर लिमिट 1 इंटू ई माइनस ई माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस ई रेस टू 0। तो 1 इंटू ई तो कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आंसर आया 1। सो I1 तो हमें सिंपली 1 मिला। I2 क्या है? इंटीग्रल 0 टू 1 साइन पाई एक्स बाई 4 dx। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4। ये जिन्हें नहीं समझ में आया ना, वो क्या सोचे इसको कि लेट से साइन ax, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉस ax बाई a, वैसे। करेक्ट? सिंपली पाई बाई 4। सो दिस विल बिकम माइनस 4 बाई पाई, कॉस में 1 रखो x की जगह पे, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, इजंट इट? अब क्या करेंगे, तो सिंपल सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यानी कि कॉस पाई बाई 4 कितना होगा, कॉस 0 कितना होगा। सो माइनस 4 बाई पाई, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस 0 1। करेक्ट? तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस रूट 2 बाई रूट 2 पाई। तो i कितना हो जाएगा, तो I1 हमें मिला 1, बेसिकली प्लस साइन है, ये माइनस है, तो माइनस 4 इंटू 1 बाई रूट 2 बाई रूट 2 पाई। आई सजेस्ट कि इसका आंसर एक बार देख लेना चाहिए, क्या बोलते हो, है ना? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे, जो हमने किया है वो राइट है, गलती कोई हो नहीं गई हो, है ना? गलती तो दिख नहीं रही है, बट एक गलती है, क्योंकि ये 1 सही है, लेकिन जब हम यहाँ पे ये कॉस वाला सॉल्व कर रहे हैं, साइन से कॉस में कन्वर्ट किया, उसके हिसाब से आंसर आ रहा है 4 बाई पाई। वो मैं मानता हूँ 4 बाई पाई कैसे आएगा, बट माइनस 2 रूट 2 बाई पाई आया, माइनस 2 रूट 2 बाई पाई। तो एक काम करते हैं, चलो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस के यहाँ पे कुछ जिस तरह से लिखा है ना, उसमें हम कुछ ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन में प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस, सही बात है, ये 1 ही आएगा, ये 1 आ गया, बराबर है। यहाँ पे हमने माइनस 4 बाई पाई बाहर निकाल दिया, दिस विल बी कॉस 4 माइनस दिस, यस, ओके ओके। चलो लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, माइनस 4 बाई पाई रूट 2 प्लस 4 बाई पाई, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अब I2 में थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, आई डोंट वांट टू कीप रूट 2 नीचे, तो मैं ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं,
4/पाई पॉजिटिव आगे ले लिया माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। नीचे से √2 हटाने के लिए ऊपर √2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। देन वाई दिस इज गेटिंग कंफ्यूजिंग। तो ये हो गया 4/पाई 1 माइनस, या 1 माइनस भी नहीं करने की जरूरत है, लेट्स सिंपली कीप इट 4/पाई। ओके, ये हमने अननेसेसरीली पुल अप किया है। चलो यहाँ से सिंपल है। देखो यहाँ पे गलती क्या हो रही है, आई जस्ट सिंपली बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। ये 4/पाई है, करेक्ट, पॉजिटिव वाला है ना, और ये हम लिख सकते हैं 2 into 2, और उसमें से एक हो जाएगा 2√2/पाई। नाउ योर आई इज गोइंग टू बी 1 प्लस 4/पाई माइनस 2√2/पाई। आई डोंट नो एकदम से क्या हुआ, बट व्हाट आई वाज डूइंग इज सब करेक्ट ही था। इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, एलसीएम लेके 1 माइनस √2/2 तो भी करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन यू ओपन इट अप इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली, that means rearranging the terms, correct। बट यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट ओपन ही कर लिया, ओपन करके यहाँ पे ये कट हो सकता है, सो इट विल गेट कैंसल्ड एंड विल गेट समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर आंसर, डोंट वरी, है ना। होता है कभी कभी थोड़ा, वो भी रीअरेंजिंग द टर्म्स है। बेसिकली व्हाट वी गॉट इज एवरीथिंग करेक्ट, रीअरेंजिंग द टर्म्स में हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ा, एंड दैट्स वेयर वी लिटिल बिट हेजिटेट हुआ, लेकिन हुआ डेफिनेटली हमसे, करेक्ट। फर्दर एमसीक्यूज है। MCQs आर वेरी सिंपल। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पहला तो सिंपली 1 + x², है, सो यू आर जस्ट सिंपली सपोज टू पुट द फॉर्मूला tan इनवर्स x/a, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, बट a 1 है, सो वो भी बॉदर नहीं रहेगा, वो भी बात इजी हो गई। देन तो उसके बाद जो MCQ है, द नेक्स्ट MCQ आफ्टर दैट इज 22(1) विच इज गिवन 4 + 9x², तो यू कैन जस्ट सिंपली टेक 9 कॉमन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड गेट इट डन विथ इट वेरी इजीली, है ना। सो आई गेस 2 MCQ आप लोग आराम से ट्राई कर लोगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, एंड आई कैन इजीली से कि हमारे यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई जो हमने सीखी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आज का हमारा वो कंसेप्ट था। वहां पे हमने 2 थियरम देखे, बट उससे पहले देखा एरिया फंक्शन, देन वी अंडरस्टूड थियरम्स। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही होगा। We understood one example, if you remember integral -2 to 3 करके हमने देखा। उसमें एक और छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि जनरली एग्जाम में ऐसा आता नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो 100%, ऑलमोस्ट 99.99% वो जो होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे और सेटिस्फाइड होंगे। द काइंड ऑफ एग्जाम्पल वी अंडरस्टूड के जिसमें हमारा -1 से 1 में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वो सारी चीजें आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आ सकती है, करेक्ट। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या सपोज MCQ में, है ना। व्हाई आई सेड MCQ, बिकॉज इन अवर गुजरात बोर्ड पैटर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुजरात बोर्ड में 50 MCQs आते हैं। तो इन दो सिचुएशन देयर मे बी चांसेस कि आपको उस तरह का MCQ पूछे और बोलेंगे कि क्या ये फंक्शन डिफाइन होता है, सो विल से नो। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के अंदर आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रह रहा था, दैट मीन्स इट शुड नॉट बी डिफाइंड। इंटीग्रल हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, सब हो जाएगा, बट हम बोलेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है। एम आई क्लियर, है ना। सो आई गेस दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडे, एंड इफ यू डू अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड द एग्जांपल्स और द एक्सरसाइज वी सॉल्व टुडे, प्लीज प्रेस अ लाइक बटन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।